we have been told that I can see in front they are carrying 3 to 4 policemen, a few of them severely injured. They have got massive head injury. They are the policemen, those who are coming out as of now, and we can see that the police suddenly was taken unaware. Now, as of now, as we speak, the police is now charging back. They are trying to gain some ground. Okay, stay with me for a moment, Ankit. You're reporting breaking news. Let me quickly also bring in Kishan Kumar, my colleague, who is also injured in this. Kishan, आप उस समय तस्वीरें खींच रहे थे, हमें बताइए क्या हो रहा है इस समय और आप पर किसने हमला किया? जी गौरव जी, मैं आश्रम के पास शूट कर रहा था थोड़ा नजदीक से, तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाले को ऊपर से अटैक हुआ है। वो बेहोश होके गिर गया। मुझे पता नहीं उसे गोली लगी है, पत्थर लगा है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल, मुझे लगा था वो मर गया था। उसे पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने मुझे दूर जाने के लिए कहा। जब मैं दूर जाके शूट करने लगा तो दूर वाले जो बाउंड्री बना के पुलिस घेरे हुए थे, उन्होंने मुझ पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं न्यूज चैनल से हूँ, मीडिया से हूँ, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी मेरी, और मुझे 25-30 लोगों ने घेरा बना के लट से पिटाई की है और मेरा कैमरा तोड़ दिया है, मेरा लाइव मशीन तोड़ दी है। और जब मैंने उनसे अपने लाइव मशीन और कैमरा मांगना चाहा तो उन्होंने फिर मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब एक बंदा मुझ पर अटैक करता है तो दूर से भी लोग आते हैं और पिटाई करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मीडिया वालों को चारों तरफ घेरा बना कर पीटा है सबको। उनके कैमरे छीन लिए, ना उनको वापस दे रहे हैं कैमरे। जो कोई कैमरामैन दूर भाग गया उसके कैमरा बच गया है, अदरवाइज जो भी वहाँ पास से शूट कर रहा था या शूट जिसका चल रहा था वो सही सलामत नहीं है वहाँ पर। किशन, ये बताइए कि आप लोग के बताने के बावजूद, और ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, ये नितिन जैन है, आज तक के हमारे संवाददाता, उनके हाथ में उनका माइक है और उसके बावजूद ये जानते हुए कि ये पत्रकार हैं, एक पुलिस वाला उन्हें पीट रहा है, तो आखिर क्यों पुलिस इस तरह के कदम उठा रही है? क्या उनको ये कहा जा रहा है उनके अफसरों द्वारा कि आप मीडिया को यहाँ से हटाइए? मुझे लगता है वो ऊपर से निर्देश आए हैं कि मीडिया वालों को भी सभी पीटो और उनका कैमरे छीन लो। जी, मीडिया वालों को टारगेट किया जा रहा है, उनको घेर के पीटा जा रहा है, उनसे कैमरा छीना जा रहा है। जो हमारे नितिन जैन रिपोर्टर को भी मेरे सामने पीटा है, उसके माइक के 2 टुकड़े हो गए हैं। मैंने अपने आईडी दिखाया उनको कि मैं मीडिया से हूँ, मैंने अपना कैमरा दिखाया, मैंने लाइव मशीन दिखाई है कि मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ शूटिंग ही कर रहा हूँ दूर से, वो भी। और मैं इतनी दूर था कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, फिर भी मुझे अटैक किया गया है जी, जानबूझकर अटैक किया गया है। कितनी चोटें आई हैं पत्रकारों को? क्या काफी बड़ी संख्या में पत्रकार घायल हैं यहाँ? साथी एक दूसरे चैनल का पत्रकार है, कैमरामैन है, उसकी आंख के ऊपर डंडा मारा है। वो उसका चेहरा मतलब देखने लायक ही नहीं था, उसका पूरा चेहरा घूमते हो गया था जी। ये भी कहा जा रहा है कि आश्रम के अंदर से बंदूकें उनके पास है और गोलियां चलने की आवाज आई है। जी, आश्रम में पता नहीं लग रहा कि गोली कहाँ से चल रही है। मैंने देखा है पुलिस वालों की लाशों को भी पिटाई कर रहे हैं, लाशों को पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले। कोई डेड बॉडी पड़ी है, बच्चों की पड़ी है, उनमें डंडों से मार रहे हैं जी। ऐसा हो रहा है जी यहाँ पर। इस समय आप क्या देख रहे हैं? क्या पुलिस की जो क्रेन्स थी जो अंदर जा रही थी आश्रम के अंदर, आश्रम की 50 फुट ऊंची दीवार को तोड़ रही थी, क्या वो क्रेन अभी भी है या लौट आई हैं? अभी भी ऐसा हो रहा है जी, अभी भी लोग चुन के पुलिस वाले मीडिया को तो अटैक कर ही रहे हैं जिससे वो शूट ना कर पाए, और अपने साथियों के मारे जाने पर भी वो थोड़ा क्रोधित है और बच्चों को भी पिटाई कर रहे हैं, छोटे बच्चों को मार रहे हैं। मैंने अपने साथी कर्मचारियों को खून पे लटक देखा है जी गौरव जी। किशन, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हम तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहिए। These are 4 pictures that we are getting to our viewers from that battleground in Hisar. That's that Satlok Ashram, 50 feet high walls in places. That is where the ashram, now well fortified, women and children in the outer periphery being used as human shields, and then gundas armed with petrol bombs and also country-made weapons attacking the police, and the police in turn attacking journalists. Aaj Tak's Nitin Jain now joins me on the phone line from Hisar. Nitin, पुलिस ने आप पर क्यों हमला किया? आपके हाथ में तो माइक आईडी बहुत साफ दिख रहा है।
देखिए गौरव, हम लोग है ना बहुत दूर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, सतलोक आश्रम के उसकी सारी तस्वीरें जो है बयान कर रहे थे, फोनो चल रहा था। इतने में एक पुलिस वाला आया दौड़ा हुआ और उसने आओ देखा ना था और डंडे मारने शुरू कर दिए। मेरे मोबाइल तोड़ दिया, मेरे पास गन माइक, तो मैंने उसको गन माइक दिखाने की कोशिश की, उसने गन माइक पे डंडा मारा और उसके बाद उसको समझाने की कोशिश, उसके सारे साथियों ने घेर लिया। ये पूरी प्रॉपर जो है इनको पुलिस की तरफ से गाइडलाइंस, ऐसा लग रहा था कि मीडिया को नहीं छोड़ना है। इतना बुरा हाल था गौरव, मैं आपको बताऊं, हम तो पीटे, जो बच्चे थे, जो औरतें थे, उनको पुलिस मार रही थी, जो लाशें थी उन पे डंडे चला रहे थे पुलिस, जो मर गए हैं उन पे लाश, कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं था पुलिस का। पुलिस बिल्कुल ऐसे थी, बर्बरता थी, निरंकुश थी कि कोई उनको कहने सुनने वाला नहीं था। पुलिस वालों में आपस में झगड़े हो रहे थे कि एक तरफ कुछ पुलिस वाले चाह रहे थे कि बच्चों और औरतों को कोई निशाना ना बनाए, तो दूसरी तरफ पुलिस वाले उनको मार रहे थे और उन्हीं से लड़ रहे थे आपस में कि इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मतलब कोई स्ट्रैटेजी जो ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस को स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो नील नजर आ रही थी। पुलिस पागल हो गई थी, जिसको देखा जहां देखा उसको मार रही थी। कई कैमरामैन को जान के टारगेट किया गया जिससे कि वो शूट न कर रहे, जबकि वो जो गाइडलाइंस है उसका पूरा उसको मानते हुए काम कर रहे थे। पुलिस के पीछे से सब कुछ शूट कर रहे थे, चुप के शूट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ये नहीं चाहती थी कि ये सब शूट हो, ये नहीं चाहती थी कि ये जो पूरा ये जो बवाल हो रहा है वो कैमरे में आए। पुलिस चाहती थी कि किसी भी तरीके से वहाँ से मीडिया हट जाए, तो उन्होंने मीडिया को टारगेट किया। एक बार ही नहीं, कई बार मेरा मोबाइल फोन छीन लिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरा गन माइक तोड़ दिया। हमारा जो कैमरामैन किशन था उसको मारा घेर के चारों तरफ, जब उसने सामान मांगा तो उसको और मारा, उसका सारा लाइव ही तोड़ दिया उसका। ये तो हमारे साथ कैमरामैन शकील का हाथ तोड़ दिया और बाकी पता नहीं चल रहा है। कई चैनल्स के रिपोर्टर्स को मारा है, कई लोगों को, मतलब पुलिस की कोई नितिन रणनीति थी ही नहीं किस तरह से यहाँ पर इस आश्रम को में से लोगों को सुरक्षित निकालना है और वो संत जो अपने आप को कहते हैं रामपाल, उनको गिरफ्तार करना है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई रणनीति नहीं। बिल्कुल ग्राउंड पर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी सामने नहीं आई गौरव, मैं आपको बताता हूँ। उनको साफ पता था कि इतने औरत थे, इतने बच्चे बैठे हैं, अगर वो बैठे हैं जबरदस्ती या कुछ भी कर रहे हैं, वो निर्दोष है, मासूम है। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ऑर्डर्स को वायलेट भी किया तो उनको तरीके से निकाला जा सकता था, पैसिव किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने आते आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर, वाटर कैनन मारे। अच्छा, जब वो लोग निकलने चाह रहे थे तब भी उन पर हमला किया। जो आदमी पुलिस वाला है उसने औरतों को डंडे मारे, जो फीमेल पुलिस वाले थे वो उनको बचाने में लगी हुई थी। मतलब पुलिस में आपस में लड़ाई हो रही थी, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, कोई सीनियर ऑफिसर वहां पे नजर नहीं आ रहा था। जो भी That is failure of leadership at the level of the police, attacking journalists, attacking women and children who were trying to get out of that ashram, where reports seem to indicate they were being held against their wishes. Nitin, bane rahiye aap mere sath. Let me also bring in headlines today's Ankit Tyagi, who's once again back with us. Ankit, you've been trying to speak to your sources in the police and in the administration. Do we have any details about the number of people injured in these clashes? Gaurav, complete failure and complete breakdown of the leadership here. I've been trying to call up a lot of senior officials. Nobody is taking the calls as of now. Let me very quickly tell you what is the situation. You were just speaking to Nitin and Shakil and also Kishan. We were all together when this attack took place. We tried to intervene, but the policemen were completely completely lost. They were just breaking out their frustration on media, on people those who are trying to flee. Right now, I am the only among the few 2-3 journalists those who are inside. Everybody else has been pushed out. We are without a camera. Our cameras have been broken, and as of now, the police machine, it completely seems at the local level there is a complete breakdown of the leadership from the police. Though we have to concede that the policemen, sir, it doesn't matter. Though at मैं यही बोलूँगा sir. It seems that the police, as of now, there is a difficult task at the hands for them. Also, there are now motivated supporters of Rampal, those who are holed up inside. They are the ones those who are presenting a stiff challenge for the police to move in. But yes, initially it seemed that in over-enthusiasm and of course in the frustration of the last 10 days that the police had not been able to do, and plus the kind of dressing down they got from the court, it was all taken out on every person moving that they could find.
Okay, now are senior officers coming on ground now to supervise operations, because that is very essential to prevent collateral damage and this situation spiraling out of control, Ankit? That is something that the administration, of course, will have to answer. It won't happen today, but it certainly is a question that has to be asked of the administration. Why is it that all the senior officials are not present here? In fact, even those who were present, Nitin, when he was beaten up, it was in front of an SDM. We asked him to intervene, and absolutely it fell on deaf ears. So it seems that a free hand has been given. The only instruction is by hook or crook, get them out. Okay, and as we speak, that operation, is it still underway, or is there a lull, the police regrouping before they once again try and get in and try and get Rampal out of that ashram? Well, the operation is still on, Gaurav. The policemen standing on one side. As I told you just about a few minutes back, they charged, the supporters of Rampal charged out at the policemen. Post that, now they are trying to regroup. They are trying to ensure that they are in a position to again charge. Still, stone pelting is being done from the ashram. You know, the problem is that ashram is 50 to 60 feet high, the roof. And from there, the force at which even a stone, a brick that comes out, that is massive. The policemen not able to throw the stones back because it is very high. So of course, the operation is still on, still confrontation brewing. And right now, I can see the police officers urging every possible resource available to move in front. There are, it's been almost an hour, in fact, more than an hour that this operation began. And surprisingly, the police have not been able to move inside the ashram. The only people, those who have come out, the only people, those who have been beaten up, the only people, those who have been injured, were the women and children, and the people, those who were standing outside. They were the ones, those who were trying to flee. They were the ones, those who were beaten up. But the core base of Rampal still very intact. Okay. Now, what we are also being told is Rampal supporters, and those are more pictures of other journalists who have been injured in clashes with the police. It just defies logic. Why would police attack journalists instead of working to get that ashram vacated and arresting that so-called Sant Rampal who's been eluding arrest? That is where the police and the administration were initially allegedly complicit, and now they shoot the messenger, attack the media. Ankit, I believe Rampal supporters are planning multiple protests in multiple cities. Where does this man get the kind of resources he has? Well, Rampal has been quite a popular saint, especially among the lower cadre. He has been somebody who has earned a lot of money also. A lot of his ashrams, this ashram that we are talking about in 12 acres, a massive property. These are the same sort of property that he not only has in Haryana but outside Haryana also. So that there is a committee of his supporters, those who are now trying to mobilize people. There is a protest planned at Jantar Mantar today at 1:30. So journalists there giving details of how they were targeted by the police, and that is something that the Haryana Police and Administration will have to answer. That is the ashram, the Satlok ashram you see on your television screen. These are some people who are being taken out, forcibly taken out of there. Some women police present, but eyewitnesses and reporters on ground zero reporting that women police not there. And that is something that the Haryana police will need to explain, as that reporter on ground was saying. First, it's the police that took journalists to that place right outside Satlok ashram where clashes were taking place, and then suddenly the police turned around and started attacking journalists. But look at the story that's playing out, those pictures, that fortified ashram that looks like a virtual fortress, 50 feet high walls and barricaded, and behind those walls, the first layer is women and children used as human shields, and behind them, men armed with sticks, stones, country-made weapons and petrol bombs. This is an ashram that was prepared for a clash, that war zone Hisar. 4 pictures of war zone Hisar on your television screen. Police launch an attack at this ashram to get that controversial godman out. Baba, this so-called Baba Rampal, he's wanted for murder, he's wanted for attempt to murder.
There's a non-bailable arrest warrant against him, but he refuses to submit to the supremacy of the judiciary, refuses to submit to the majesty of the law of the land. And then his supporters go and attack the police. This is a murderous attack on the police and on security forces who are trying to execute a court order. His supporters clash with the police. They carry out a show of strength, saying they will not submit to the law of the land. This Baba's background is on your television screen. This Baba, who used to work in the irrigation department of the Haryana government as a junior engineer and was seen as a rather careless junior engineer, he established the Satlok Ashram in 1999. The allegation against him is that there are people of dubious background who find refuge in his ashram after crimes they've committed in and around Haryana. This is a charge, but that's just one of the charges. The main case against him is murder, an attempt to murder. And now there are protests that are taking place at Jantar Mantar against police action. These are pictures that we are getting out to you from Jantar Mantar in Delhi. Headlines today is Ankit Tyagi is on ground zero. He's bringing us the latest. Ankit, any clarity on what the police intend to do at this stage? We'll try and re-establish that line with Ankit Tyagi in just a moment. That smoke that's coming out of the ashram is furniture that's been set on fire, and that is police, fire brigade personnel firing tear gas shells and also water cannons in that direction to push back people before the police mount an offensive. But Baba's supporters came charging out, forcing even the police to retreat. Those are injured policemen being evacuated from this so-called Baba's ashram. And clearly, somewhere down the line, the police need to look within. Why is it to get one godman out of his ashram? They have been fighting for so long with no success. What we are now being told is that some policemen did manage to enter the ashram with JCBs, that earth-moving vehicles that broke a part of the wall, but as petrol bombs were hurled at the police, they had to retreat. They will once again make an attempt to go in. But look at two pictures on your television screen, and this Baba Rampal appears to be a very well-coordinated person. Look at the offensive he's mounting against the police on ground, and he has his women supporters at Jantar Mantar. There is a case of murder. There is a case of attempt to murder against him. These are cases that are pending since 2006. This Baba has spent 2 years in jail in these cases. The question remains, when there is a non-bailable arrest warrant against him, why has he skipped more than 40 hearings in a court of law? Why is this man not submitting to the supremacy of judiciary in India? Let's play out. We'll get you more reactions that are coming in from ground zero. Journalists have been injured. There are other people who've been injured, and we'll play out those reactions for you as we play out these pictures of one wave of supporters who came out of the ashram and the police rushed them away. Some have been detained for questioning. Some who said they had been detained at the ashram against their wishes. And before we move on in this bulletin, let's take a look at what's happening in this case legally, the legal position of this case. Let's listen in to Anupam Gupta, the amicus curiae in this case. कि बाबा रामपाल ने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया है कि वो कानून और जुडिशियल सिस्टम से पर सब्जेक्ट नहीं है, वो कानून और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हैं। मैंने कहा कि जो जमानत होती है उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अभियुक्त जिसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, जो ट्रायल चल रही है उसमें पेश हो, उसके साथ कोऑपरेट करें
और अंततः जो कोर्ट फैसला सुनाए उस फैसले को सुनने के लिए, मानने के लिए पेश हों। We'll get you the latest on this big story. This self-styled godman, Baba Rampal, remains defiant. Police insist their operations will continue, and we'll keep reporting on this big story. A quick break.